कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So now we are in the 9th chapter of the 3rd canto of Srimad Bhagavatam, and we are discussing Lord Brahma's prayers. Maitreya Rishi is talking about Lord Brahma's prayers unto the Supreme Lord. How the Supreme Lord, he is the root cause of this whole creation. And Lord Brahma, he is feeling compassion for the people of this age of this material world because they are averse to the Lord. So we discussed in the previous session, in the previous shlokas, that Lord Brahma, he is talking about the people who are not conscious or who are not able to perform devotional service to the personal form of the Lord, who are not able to meditate on the personal form of the Lord. They, those who are atheists or those who are impersonalists, Lord Brahma is saying that they are destined to go to hellish planets. And then Lord Brahma, he says, we discussed in the previous session, that those devotees, those pure devotees who are able to smell the aroma of the lotus feet of the Lord, and this aroma, they can smell the aroma of the lotus feet of the Lord by mercy of pure devotees. When they hear Krishna Katha,
when they hear the glories of the Lord, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, in the association of pure devotees, then they are able to smell the aroma of the lotus feet of the Lord. And that is the only way by which they can become free from this miseries of the material existence. And those devotees who are able to smell the aroma of the lotus feet of the Lord, they are never able to forget. Lord never forgets them, and they never forget the Lord. Now today we'll start our discussion with text 6, shloka number 6 of the 9th chapter of the 3rd canto of Srimad Bhagavatam. Tavad bhayam dravina deha suhrin nimittam शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेङ्घ्रिम् अभयं प्रवृणीत लोकः तावद्भयं द्रविणदेह सुहृन्निमित्तम् शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः. Translation. O my Lord, the people of the world are embarrassed by all material anxieties. They are always afraid. They always try to protect wealth, body, and friends. They are filled with lamentation and unlawful desires and paraphernalia. And they avariciously base their undertakings on the perishable concepts of my and mine. As long as they do not take shelter of your safe lotus feet, they are full of such anxieties. Lord Brahma is talking about the conditioned living entities. In the previous shloka, he spoke about pure devotees. They are able to smell the aroma of the lotus feet of the Lord. And they always keep that aroma of the lotus feet of the Lord within their heart. And they are never able to forget the Lord. And the Lord never forgets them. Now here in this shloka, he is talking about Tavad Bhayam Dravina Deha Suhrin Nimittam. Deha, body. Suhrit, friends. Dravina, Dravya, means wealth, material possessions. Nimittam Shoka Spriha Paribhavo Vipulascha Lobhaha. So those who are in this material world, they are always in shokaha. You see the word which is used here is shokaha. Spriha. They are always in shok, they are always lamenting, they are always in misery. And spriha, paribhavo vipulascha lobhaha. Because they are always, these are the symptoms of people in this material world who are very much attached to material things. So, shokaha, paribhavaha, vipulascha lobhaha. Lobha means greed. Shoka means miserable condition or in distress. And Tavan mametya sad. So Lord Brahma, he is saying that is all these miseries which people experience is because of asad avagraha, because they have taken shelter of asat.
Mam eti. Mam and iti. That means me and mine. Mam iti. Me and mine. Okay. Asad avagraha arti moolam. Art means misery, miserable condition. Arti moolam. So material life is full of anxieties and misery. Yavan te angrim abhayam pravrinit lokah. Yavat means till the time. Nate angrim abhayam pravrinit lokah. Till the time they do not take shelter. Angrim means lotus feet of Krishna. Angrim and abhayam. Abhayam means without any bhay or without any fear. So Krishna's lotus feet is called Abhayangri. You see, Abhayam Angrim. So Krishna's lotus feet is the safest. It is free of any fear and anxiety. So Yavan Nate Angrim, till these people do not take shelter of the lotus feet of Krishna, Pravrinita Lokaha, they cannot become free from the miseries of this material world. You see, so Tavad Bhayam Dravina. People in this material world are always full of fear. Why? Because Dravina Deha Suhran Nimittam, they want to protect their wealth, their body, and their family and friends. Suhran means family and friends. They want to protect them. They want to protect all these things. You see, these three things are mentioned in the shloka. Dravina Deha Suhran, their material wealth, their body, material body, and their well-wishers, their family and friends. But the reality is that can anyone protect these things? No. And because they want to protect all these things, you see what is mentioned here. Because they are trying to protect something which is impossible, Shoka Spriha Paribhavo Vipulascha Lobha. They are full of shoka, they are full of anxiety, they are full of lamentation in trying to protect all these things, and because of their material greed. Greedy. So much of greed is there. And because of that, Tavan Mamet Yasat Avagraha Arti Moolam. And all these things are because of Mama Iti, me and mine. They are on the platform of me and mine. This is mine. This is me. You see, Mama Iti. And because of this, they are always attached to Asad Avagraha. Asad means matter or body. You see. So this is how people in this material world, they behave. Lord Brahma, he is the most knowledgeable person. And he is talking about the materialistic people. They want to protect their family, their friends, their society, country, their wealth, material wealth. But ultimately, they cannot protect all these things. Why? Because everything is controlled by Krishna and everything is destructible in this material world. But a pure devotee of Krishna never thinks like that. Why?
Because he knows that nothing belongs to me, everything belongs to Krishna. So he has no fear. That's why pure devotees of Krishna are called Abhayam. Why? You see in this shloka it is mentioned. Yavan nate Anghrim Abhayam. Because the pure devotees of Krishna, they take shelter of the Abhayam Anghrim, the fearless or safe lotus feet of Krishna. And that is why a pure devotee of Krishna is never attracted to material things, material wealth, material prosperity, material body. No. Material relationships, material family and friends. He is never attracted to all these things. Why? Because he knows that nothing belongs to me. It all belongs to Krishna. Krishna is the supreme controller. He never wants to become controller. He does not want to become manager. He does not want to become controller of this material creation. So that is why he never goes about accumulating material assets. He has no longer attraction to any kind of material possessions. Sometimes it may look like a pure devotee also is working to enhance material possessions, but no. He does not want to accumulate material possessions. Even if he is working for accumulating some wealth, that is only for service of Krishna. So there is a very beautiful pastime of one of our great Acharya. So he was a great architect, a great, so to say, a great architect, a great designer of buildings. So one of the king in one of his kingdoms, he wanted to construct a beautiful palace for himself. So he, of course, and our great Acharya, he was a pure devotee of Krishna. And he was the best and the most famous architect in the world at that time. So the king, he asked his ministers that whom should we hire to construct our palace, and all the ministers unanimously said that we have to hire that great pure devotee of Krishna to construct a palace, because no one can design a palace or construct a palace better than him. So he was called upon, our great Acharya. He was called upon by the king and his ministers. So the king, he requested our great Acharya to design and construct a beautiful palace for him. So our great Acharya, he agreed, okay, I will construct a beautiful palace for you. But whenever I would require any amount of wealth or money, you should give it to me. So the king said, okay, as you wish, my dear saintly person, how much ever amount of wealth you want, you can, the treasury of the kingdom will be open for you, and how much ever amount of wealth you want, you can come and take it away. So our great Acharya, after every few weeks, he will come and take as much wealth as possible, and he would go. So few months passed, and then the whole year passed. And every week, the king came to know that our great Acharya is coming and taking away wealth from the king's treasury. So he was very happy that his palace is getting constructed. So after 1 year, the king wanted to know what is the progress. So he called upon our great Acharya. And he asked that, my dear saintly person, how much work has been done on my palace? So the saintly person said, well, I am working on it. So the king said, I have a great desire to see what you have done, how much
progress has been made. Because every week I have heard that you come and take away wealth from the treasury. So I want to know how much progress has been made in this regard. So the saintly, our great Acharya, he said, okay, you come with me. I'll take you to the place where I am constructing this beautiful palace. So the king, he accompanied our great Acharya, and they started to, all of them, they left for that place where this palace was being constructed by our great Acharya. So they kept traveling and they could not reach that place. After long travel, the king suddenly inquired our great Acharya that, my dear saintly person, how far this place is from our kingdom? So our Acharya, he said, just few minutes, just few kilometers we have to go. So after they traveled for a few kilometers, the king, they reached the beautiful temple of Lord Krishna. So the king, our great Acharya, he told the king to step down and have darshan of the Lord. So the king stepped down and he had darshan of Lord Krishna. And beautiful, huge, gorgeous temple. So then the king asked that, where is my palace? So our great Acharya, he said, okay, you sit down here and close your eyes. So the king sat down and closed his eyes. When he closed his eyes, he saw a very beautiful palace constructed for him at some place. He saw that within his heart. And the king suddenly, he became very ecstatic. He became so happy, and he asked our great Acharya that, my dear saintly person, I just saw within my heart a beautiful palace. Where is this palace? I want to know. Is this the palace that you have constructed for me? The saintly person said, yes. Whatever money I used to take from you, I used to spend it for constructing this palace of Lord Krishna and Radharani in this material world. And because I took your wealth and I used your wealth for constructing a palace for Radha and Krishna in this material world, that is why Srimati Radharani and Krishna, they have constructed a beautiful palace for you in Golok Vrindavan in Vaikuntha. You see? So sometimes a pure devotee may look like he's acquiring wealth. He is going after wealth, but no. Wealth means Lakshmi, and Lakshmi is meant for service of Narayan. So it may look like a pure devotee is also after Lakshmi, but yes, he is after Lakshmi because people are thinking that Lakshmi belongs to them. So he wants to take Lakshmi from people and use it for service of Krishna, Narayan. Because Lakshmi, the name of Mother Lakshmi is Chanchala, and the name of Lord Narayan is Chanchala Pati. So Chanchala means Mother Lakshmi. Chanchala means she never stays at one place. And Chanchala Pati means the husband of Chanchala. So the husband of Mother Lakshmi. So sometimes, yes, a pure devotee also may be after wealth, but that wealth is for Krishna's service. Otherwise, materialistic people, they'll use that wealth for useless things like wine and money, wine and drinking wine, and they'll use it in useless things. So a pure devotee, rather than
he wants that these people, rather than using it for useless thing, they should use it for service of Krishna. So that is why when a pure devotee extracts wealth from people, it is for their benefit. When people give for Krishna, it's not that a pure devotee is getting benefited. No. The people who are giving money, they are getting benefited. The people who are giving wealth for Krishna, they are getting benefited. Because the same Lakshmi, if it is used for our sense gratification, it is a cause of bondage in this material world. But that same Lakshmi, when it is used for Krishna's temple, constructing a beautiful palace for Lord Krishna, Radharani, then that money liberates us. Same Lakshmi binds us and same Lakshmi will liberate us. If Lakshmi is used for our sense gratification, Lakshmi will become Durbhagya Lakshmi. It will cause destruction. But the same Lakshmi, when used for Krishna's service, then that same Lakshmi will become a cause of liberation. So materialistic people, they are also after wealth, and pure devotees, they are also after wealth. It looks similar. Just like a soldier or an army man and a terrorist or a criminal. Now, an army man also uses rifle. He also uses guns and machine guns and rifles and big ammunitions. And those who are criminals, they also use big ammunitions. Right? Both of them use similar weapons. Now, when a child, a small baby who has no knowledge, when he sees both of them, if he sees a army officer and he sees a criminal, for him it may look the same, that both are doing the same thing. An army person also, he is using a machine gun and he is using the same bullets, the same gun, the same trigger he is pushing to release bullets to kill people. And the same activity a criminal also does. Activity looks exactly the same. But the army officer, he gets rewarded. If he kills 100 people, the more the number of people he kills, the more is the reward. The better, the higher is the reward. Whereas a terrorist or a criminal, the more the number of people he kills, the more is the punishment. Activity is the same. It looks similar. So sometimes ordinary person also, everyone is running after Lakshmi. And sometimes it looks like pure devotees are also running after Lakshmi. But pure devotees, they run after Lakshmi for service of Narayan, not for sense gratification. This is the difference. So ordinary people, they acquire money for sense gratification. Whereas pure devotees, they want to acquire money for service of Krishna, for preaching, for temple. This is the purpose. So when an ordinary person, he acquires money, it becomes a source of misery for him. But when a pure devotee acquires money, that is the cause of liberation for not only pure devotee, but for everyone. That is why in our Sanatan Dharma, in our Sanatan tradition, whether it is Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, everywhere you will find
the principle of dan, the principle of charity. And dan or charity is meant only for pure devotees. Only pure devotees and sannyasis, those who are saintly people, they have the right to ask money from people. These begging profession and NGOs and all these things, they are all products of Kali Yuga. They are all nonsensical things existing nowadays. Charity is meant only for Brahmanas, only for pure devotees. Only they have the right, they have the authority to ask money from people. Why? Because that is for benefit of the person. Nowadays, we see people don't give money for temples. They give money for NGOs and all these nonsensical things. But no, Lakshmi is meant for service of Narayan. We cannot use Lakshmi for any other purpose apart from service of Narayan. And who can use our Lakshmi? So our Lakshmi can be used only by pure devotees, because only pure devotees can use Lakshmi for service of Narayan. If we give to NGOs and all these useless people, they cannot use our Lakshmi for service of Narayan. They'll use it for some, either their sense gratification or some other person's sense gratification. Right? So that is why the principle of charity is meant only for pure Vaishnavas, pure devotees. Charity should be given only to pure devotees, not to ordinary people, not to NGOs, not to any other so-called charities. No. So, just like a snake is poisonous, isn't it? It has venom. But if we remove the teeth of the snake is useless. The poisonous effect, the venomous effect of the snake is it is destroyed. I mean, it reduces. So then a snake is harmless. Similarly, if we accumulate wealth for our sense gratification, then it acts like a poisonous snake. It will bite us and it will destroy us. But the same wealth, when we use for service of Krishna, then the venomous snake, we break the teeth of the venomous snake is broken. So if there is too much accumulation of wealth, then it destroys the people. Because if money or wealth, if it takes precedence in our life, then everything gets destroyed. Family, relationships, everything gets destroyed. So money is very dangerous in that sense. You see, America is the richest country in the world. But you see the people of America nowadays. Now, this current generation, or even in the previous generations also, mostly people are becoming hippies. Why? Because money is a cause of destruction. If money starts riding on our head, then it destroys us. So that is why money is poisonous. Wealth is poisonous if it is used for our sense gratification. But if we use it for service of Krishna, we break the teeth of the snake, and then the snake is not poisonous. It becomes ineffective. The poison becomes ineffective. And that is why a pure devotee, even if he is running after wealth, he never gets influenced by that. He never gets affected by that. Why? Because he is above the three modes. Why? Because he is always in touch with Krishna. He never works for his sense gratification. He has given up all desires for sense gratification.
He is only working for sense gratification of Krishna. Desires cannot be stopped. A stone is desireless, a dead body is desireless, but a living entity cannot be desireless. So rather than using desire for our sense gratification, we use the same desires. We cannot stop desires, we just have to purify our desires. So rather than using everything for our sense gratification, we use it for Krishna's service. So all our desires become purified and then we become pure. So that's what Lord Brahma is saying here. That devotees of the Lord, they are abhayam, they have no fear. Why? Because Angrim abhayam, they have taken shelter of the lotus feet of Krishna. And that is why they are free from all anxieties of this material world. Whereas those people who are attached to sense gratification and material opulence, they are full of anxieties in this material world. And the biggest anxiety is death. Whereas those who are pure devotees, they have surpassed death because they know that they are going back to Krishna after death. So they have no fear of death. Whereas those who are materialistic people, they don't know what will be their future. So they are always fearful of death. So we'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. All of you can like the video, comment. You can subscribe to our YouTube channel. Try to share as much as possible. And we'll continue our discussion in the next session. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा. आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में. प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी.
तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान को, और वो कह रहे हैं कि किस प्रकार भगवान सबके स्रोत हैं और जितने भी जीव हैं उन सब की सद्गति का एक ही निवारण है, और वो है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। हमने ये भी देखा अपने पिछले सत्र में कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना या भक्ति नहीं करते, जो लोग निराकार या निर्विशेषवादी होते हैं, उन्हें नरक का द्वार देखना पड़ता है, वो नरक की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और हमने देखा अपने पिछले श्लोक में कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिन भक्तों ने, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो हरि कथा श्रवण और कीर्तन के कारण भगवान के चरण कमलों का जो सुगंध है उसका आस्वादन कर पाते हैं, और इस कारण से वो भगवान के इस जड़ जगत के सारी दुखों से दूर हो जाते हैं, उसको पार कर लेते हैं, और वो अपने हृदय में उस स्वाद को सदा बसा कर रखते हैं, और वो कभी भगवान को नहीं भूलते और भगवान कभी उन्हें नहीं भूलते। तो अब आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक से। 6ठा श्लोक। तावद भयम द्रविण देह सुहृन्निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेङ्घ्रिम भयं प्रवृणीत लोकः। तावद् भयं द्रविण देह सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेङ्घ्रिम भयं प्रवृणीत लोकः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। O my Lord, the people of the world are embarrassed by all material anxieties. They are always afraid. They always try to protect wealth, body, and friends. They are filled with lamentation and unlawful desires and paraphernalia, and they avariciously base their undertakings on the perishable concepts of my and mine. As long as they do not take shelter of your safe lotus feet, they are full of such anxieties. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान, इस जगत के लोग सदा भय से भरे रहते हैं। वो हमेशा अपने शरीर, अपना धन और अपने सगे संबंधियों की सुरक्षा का प्रयत्न में लगे रहते हैं, और इसीलिए वो सदा शोक और गलत इच्छाओं से भरे रहते हैं, और उनके अंदर ये भावना होती है मैं और मेरा। जब तक वो आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक वो इन दुखों से और शोकों से भरे रहेंगे। अब आप देखिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तावद भयम द्रविण देह सुहृन निमित्तम। भयम, तावद भयम, भयम का मतलब भय, डर। तब तक भय बना रहता है। किस कारण भय बना रहता है? अब देखिए, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं श्लोक में तो पहली पंक्ति ये कह रहे हैं तावद भयम, ये भय से भरे रहते हैं लोग इस जगत में।
क्यों? द्रविण देह सुहृद निमित्तम, क्योंकि वो द्रविण, द्रविण मतलब द्रव्य, अपने धन, देह मतलब अपना शरीर, और सुहृद मतलब शरीर से जो संबंधित लोग हैं, यानी अपना परिवार, अपना अपने जो सगे संबंधी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनको हमेशा भय बना रहता है। अपने शरीर के लिए, अपने धन को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, और अपने सगे संबंधियों को बचाने के लिए सदा वो भय में रहते हैं, दुख में, डर में, डर की भावना बनी रहती है। और इस कारण से क्या होता है? शोक, शोक में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। ठीक है। स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः, और इतनी लालच है लोगों के अंदर भरी हुई है। और क्या कारण है उसका? तावन ममेति असद अवग्रह, असत जो ग्रहण किया हुआ है, असत से जो आसक्ति बना रखी है। असत का मतलब ये जड़ शरीर या जड़ वस्तु। तो जड़ वस्तु से और जड़ शरीर से इतनी आसक्ति बनी हुई है कि मम इति, मैं और मेरा, मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये तो ये मम इति, ये मैं और मेरा की जो भावना है, इससे इतने ग्रसित हैं। और जड़ वस्तु से इतने आसक्त हैं लोग कि आरती मूलम, तो ये जड़ है उनके आरती, आर्त मतलब दुखी होने, आर्त मतलब दुखी होना, तो आर्त हैं लोग, दुखी हैं इस कारण से, वो जड़ है। मूलम, मूलम मतलब जड़। तो जो असद को उन्होंने ग्रहण किया हुआ, यानी जड़ वस्तु से जो आसक्ति बनाई हुई है, वो जड़ है सारे दुखों का, सारी परेशानियों का। फिर क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? यावन न ते अंघ्रिम अभयम, कह रहे हैं कि जब तक, यावत नते, यावत मतलब जब तक, नते अंग्रिम जब तक वो अंग्रिम, अंग्रिम मतलब भगवान के चरण कमल, और कह रहे अंग्रिम अभयम, अभय, अंग्रिम अभयम यानी भगवान के जो चरण कमल हैं वो अभय हैं, मतलब वो सारे भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि यावन न ते अंग्रिम अभयम, जब तक कोई मनुष्य भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेगा, प्रवृणीत लोका, तब तक वो इस जगत के भय से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान के चरण कमलों को यहाँ क्या कहा जा रहा है? अंग्रिम अभयम। उनका जो चरण कमल है वो अभयम, अंग्री है, वो सारे डर और सारे भय से मनुष्य को मुक्त कर देता है। तो इसीलिए अब इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि दुखों का कारण इस जड़ जगत में, इस जड़ जगत के जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी, जो सबसे विद्वान व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड के, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो लोग शोक से भरे रहते हैं, दुखों से भरे रहते हैं। और उसका क्या कारण है, क्यों वो दुख है, क्यों वो शोक है लोगों को। कह रहे हैं तावत भयम द्रविण देह सुहृद निमित्तम,
मेरा देह, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो। इसलिए आप देखिए श्लोक में तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं तावन ममेति, मम इति, मैं और मेरा, मैं और मेरा, इस चक्कर में मनुष्य पड़ा रहता है, इसमें फंसा रहता है। मैं और मेरा, मम इति, ये मैं हूं और ये मेरा है। और इसके कारण क्या होता है? शोक आकुल हो जाता है, मनुष्य शोक से भर जाता है। सारे शोकों का कारण है ये। और कह रहे हैं ब्रह्मा जी असत अवग्रह, ये जो असत चीज है, असत का मतलब जो जड़ वस्तु है उससे जो आसक्ति होती है, उससे जो अटैचमेंट होता है, वो कारण है सारे दुखों का। क्योंकि जड़ वस्तु से आसक्ति के कारण मनुष्य अहम ममेति यानी मैं और मेरा के जाल में फंस जाता है। और इस जाल में फंस के मनुष्य सोचता है कि मैं जो मेरा धन है उसे मैं बचा लूं कैसे भी करके, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, उनको मैं बचा लूं, उनको मृत्यु से रोक लूं, बचा लूं। जो मेरे मैं हूं, मैं अपने आप को बचा लूं। तो ये इतना अधिक मनुष्य इस में फंस जाता है तो वो ये भूल जाता है कि इनको कोई नहीं बचा सकता। ये प्रकृति का नियम है कि इस सब को नष्ट होना है, ये सब नश्वर है। चाहे वो जड़, जो कुछ भी जड़ है, जो कुछ भी असत है, असत, असत का मतलब ही है उसको नष्ट होना है। चाहे वो धन हो, चाहे हमारे सगे संबंधी हो, या चाहे हमारा शरीर हो। कितना भी कोई मनुष्य अपनी चेष्टा कर ले, इन चीजों को कोई भी मनुष्य ना तो बचा सका है, ना कोई बचा सकता है। तो जो जड़ जगत में जो व्यक्ति जड़ जगत में जो भौतिक चीजों से आसक्त होते हैं, जिसको यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं असत अवग्रह, तो जो असत अवग्रह होते हैं उनके लिए इस जड़ जगत से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, और भय से मुक्त होना लगभग असंभव है। लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी उपाय भी बता रहे हैं, निवारण भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यावन न ते अंग्रिम अभयम, भगवान के जो चरण कमल है वो अभय है। सारे भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है। तो जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता है, तब तक वो अभय नहीं हो सकता, तब तक वो भय से मुक्त नहीं हो सकता। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, तो एक तरफ तो ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं जो जड़ जगत में जो लोग लगे हुए हैं, भौतिक जगत में। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी शुद्ध भक्तों के बारे में भी बात कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी बात किया और इस श्लोक में भी कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के,
उन्हें कोई चिंता, कोई भी दुख, कोई भी भय नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इस जगत के ईश्वर नहीं हैं, हम इसको नियंत्रण नहीं कर रहे और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। उसे ये पता है, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं इसकी। उसे पता है कि इस जगत को भगवान चला रहे हैं, वही सबकी रक्षा करते हैं और सब कुछ उन्हीं का है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे किस बात की चिंता, किस बात का भय, किस बात का दुख। तो वो इस जड़ जगत में जो लोग लगे हुए हैं, जड़ वस्तुओं के आसक्ति में जो कर्म कर रहे हैं, उनके कर्मों से उसके कर्म में बहुत अंतर होता है। जड़ जगत में मुख्यतः लोग धन अर्जित करना, गाड़ी बंगला, इन चीजों के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इसको जितना इकट्ठा कर लिया जाए, जितना अधिक हम इसको भर लें, उतना अच्छा होगा। उसके पीछे लोग भागते रहते हैं जड़ जगत में, धन एकत्रित करने के पीछे। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कभी भी इन चीजों से आकर्षित नहीं होते। वो कभी भी धन अर्जित करना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी धन अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो धन अर्जित नहीं करते। धन के पीछे वो नहीं भागते, और यदि भागते भी हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए। एक बार क्या हुआ, एक हमारे बहुत ही महान आचार्य इतिहास में हुए, और वो जो थे वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। मतलब भवनों को बनाना, बड़े बड़े मंदिरों और बड़े बड़े महलों को बनाने में वो उस समय पृथ्वी पर सबसे महान व्यक्ति थे। उस विषय में उनसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं था। तो एक राजा था, वो अपने राज्य के लिए राजमहल बनाना चाहता था। अब उस समय पूरे पृथ्वी पर हमारे जो महान आचार्य हैं, वो उस समय उस पृथ्वी पर सबसे महान आर्किटेक्ट थे, यानी महलों को बनाने में सबसे परम स्थान था उनका पूरे विश्व में। तो अब राजा को अपना राजमहल बनाना था, तो किसे बुलाएगा? तो उन्हीं को बुलाया गया, हमारे जो महान आचार्य हैं। तो सारे मंत्रियों से जब पूछा राजा ने, तो सबने यही कहा कि हमें उन्हीं से ये जो महल है अपना वो बनवाना चाहिए। तो सबने आह्वान किया, तो हमारे जो महान आचार्य हैं वो आए राजसभा में। तो जो राजा था उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हे प्रभु, हे महान संत, स्वामी महाराज, मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे राज्य के लिए हम बहुत बड़ा राजमहल बनाएं, और मैं चाहता हूं कि आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप इस क्रिया को, इस कर्म को करें। तो जो हमारे महान आचार्य हैं उन्होंने कहा कि हे राजन, हमें ये जो तुमने दायित्व दिया है ये हम लेते हैं, लेकिन हमें इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी। तो आप इसका जो प्रयोजन है वो आप कर दें। तो जो राजा था उसने कहा कि आपको जितने भी धन की आवश्यकता है
हमारा जो राजमहल का कोष है वो आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। आप जब भी चाहें, जितना भी चाहे धन आप लेकर इस जो कर्म है उसको, उसके लिए आप जितना धन चाहें यहां से ले सकते हैं। तो जो हमारे महान आचार्य हैं वो हर कुछ हफ्ते पे आते थे, हर हफ्ते आते थे और खूब सारा धन लेकर चले जाते थे। तो जो राजा था उसे पता लगा, तो इस तरह से कई महीने निकल गए, एक साल निकल गया, एक वर्ष निकल गया। और राजा को ये पता था कि हमारे जो महान आचार्य हैं वो कुछ समय पर आते हैं और धन जो है वो लेकर जाते हैं। तो राजा को भी संतुष्टि थी कि चलो भाई, हमारे राजमहल का काम चल रहा है। तो ऐसे एक साल निकल गया। तो एक वर्ष के बाद राजा ने जो हमारे महान आचार्य हैं उनके पास गया और उसे बोला कि हे स्वामी महाराज, मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारा जो राजमहल बन रहा है उसकी कहाँ तक उन्नति हुई है, उस क्रिया में कहाँ तक बना है। मेरी बहुत इच्छा है ये देखने की अपने नेत्रों से। तो हमारे जो महान आचार्य हैं उन्होंने बोला ठीक है राजा, आप चलिए मेरे साथ, हम लोग चलेंगे और कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे और हम आपको जो राजमहल है उसका दर्शन कराएंगे। तो रथ पर वो चल पड़े, चले जा रहे, चले जा रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि हे स्वामी महाराज, ये कहाँ पर महल बनाया है आपने? तो जो हमारे महान आचार्य हैं उन्होंने कहा कि बस कुछ ही समय दूर है, कुछ ही दूरी पर ये जगह है। तो जब वो थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने देखा एक बहुत ही भव्य मंदिर भगवान कृष्ण का। तो वो हमारे आचार्य ने कहा कि हे राजन, आप चलिए मंदिर में, आप दर्शन कीजिए। तो जो राजा था वो हमारे महान आचार्य के साथ अंदर गया मंदिर में और दर्शन किया उसने। बहुत ही उसे आनंद आ गया दिव्य दर्शन भगवान के प्राप्त करके। फिर राजा ने पूछा कि स्वामी महाराज, हमारा जो राजमहल है वो किधर है, कितना दूर है यहाँ से? तो जो हमारे महान आचार्य थे उन्होंने बोला कि राजन, तुम यहाँ बैठकर अपने नेत्रों को बंद करो। तो राजा ने वैसा ही किया, अपने नेत्र बंद किए। जब उसने आंख बंद की तो उसने अपने हृदय में देखा, उसको ध्यान हुआ और उसने देखा एक बहुत ही अद्भुत महल, बहुत ही अद्भुत, कल्पना से अधिक, कल्पना से परे। वो हैरान रह गया। तो उसने तुरंत अपने नेत्र खोले और उसने तो हमारे महान आचार्य थे उनसे पूछा कि स्वामी महाराज, ये जो महल आपने, ये मुझे दर्शन हुए, ये कौन सा महल है? क्या यही महल है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? तो जो हमारे महान आचार्य थे उन्होंने कहा, हाँ राजा, यही वो महल है। तुमसे जो भी मैं धन लेके जाता था, इस धन का प्रयोग मैंने ये राधा कृष्ण का महल बनाने के लिए प्रयोग किया है। और क्योंकि तुम्हारा जो तुमने धन एकत्रित किया था उसका प्रयोग राधा कृष्ण का महल बनाने के लिए मैंने किया है, इसलिए श्रीमती राधा रानी और कृष्णा ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनाया है गोलोक वृंदावन वैकुंठ में। क्योंकि तुम्हारे धन का प्रयोग भगवान का घर, भगवान का महल बनाने के लिए इस जगत में प्रयोग हुआ है।
तो शुद्ध भक्त भी हो सकता है कि धन अर्जित करे, लेकिन वो धन कभी अपने लिए अर्जित नहीं करता, वो भगवान की सेवा के लिए करता है। वही लक्ष्मी यदि नारायण के लिए प्रयोग होती हैं तो वो भाग्य लक्ष्मी होती है, लेकिन वही लक्ष्मी जब नारायण के लिए नहीं प्रयोग होती हैं, किसी भी और चीज के लिए प्रयोग होती हैं, तो वो दुर्भाग्य लक्ष्मी बन जाती हैं। आप देखिए, धन जिसके पास होता है, धन कई बार हमें बहुत बांध देता है, हमें दुख देता है। जिसके भी सर पे धन चढ़ जाता है, उसके न तो संबंध अच्छे रह पाते हैं उस घर में, परिवार में। जैसे आप देखिए, अमेरिका विश्व का सबसे धनवान देश है, लेकिन आप वहां के युवा पीढ़ी को देखिए, आज भी नहीं, पहले भी ऐसा ही था, हिपीज बनते हैं लोग वहां पे। तो धन एक विष की तरह है, यदि वो भगवान के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो धन जो है हमारे लिए विष होता है। जैसे एक सांप से तुलना किया गया है, जैसे सांप होता है तो उसमें विष होता है, लेकिन अगर सांप का दांत तोड़ दें तो उसका विष जो है वो किसी काम का नहीं रहता, वो सांप हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उसी प्रकार धन हमें बहुत हानि पहुंचा सकती है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, तो उस सांप का दांत तोड़ देते हैं। तो वो सांप भले ही विष हो उसमें, लेकिन वो हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। नहीं तो यदि धन सर पे चढ़ गया तो मनुष्य को वो पतन की ओर लेके चला जाता है। तो वही धन जो हमें बांधता है इस जड़ जगत से, जो हमें नरक की ओर ले जाता है, वही धन यदि भगवान के लिए प्रयोग करें तो हमें मोक्ष देता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे एक, कई बार मैंने उदाहरण दिया है कि एक जैसे सिपाही होता है और एक अपराधी होता है। अब सिपाही भी बंदूक का प्रयोग करता है और एक अपराधी भी बंदूक का प्रयोग करता है। अब एक छोटा बच्चा देखेगा तो उसको लगेगा कि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही बंदूक उठाए हैं, दोनों ही गोली चला रहे हैं, वही ट्रिगर है, वही गोली है, वही बंदूक है, एक जैसा लगता है देखने में, लेकिन एक जैसा नहीं है। सिपाही अगर लोगों को मारेगा तो उसको पुरस्कार मिलता है, लेकिन यदि अपराधी मारेगा तो उसे दंड मिलेगा, है कि नहीं? तो दिखने में एक जैसा लगेगा। तो हो सकता है शुद्ध भक्त भी धन अर्जित करे और एक साधारण मनुष्य भी करे, लेकिन दोनों के कर्मों में अंतर है, फलों में अंतर है। शुद्ध भक्त धन अर्जित करता है भगवान के लिए, और साधारण मनुष्य धन अर्जित करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। वही धन अगर हम भगवान के लिए लगाएं तो वो हमें मोक्ष देता है, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएं तो वो हमें पतन की ओर लेके जाता है। तो शुद्ध भक्त यदि किसी का धन, इसीलिए जो दान की प्रक्रिया है, जो दान है, ये सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए बना है, सन्यासियों के लिए बना है, वैष्णवों के लिए बना है। ये आजकल एनजीओ बकवास चीजें चल रही हैं। धन, लक्ष्मी, हमारी लक्ष्मी को नारायण के लिए सिर्फ शुद्ध भक्त ही लगा सकते हैं। जिनमें भक्ति नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो हमारे धन को क्या लगाएंगे, कहाँ पे? वो या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे हमारे धन से, या फिर किसी और की इंद्रिय तृप्ति करवाएंगे। भगवान की सेवा में तो हमारी लक्ष्मी को सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त ही लगा सकते हैं। तो दान का बहुत महत्व है, विशेषतः जो लोग धन अर्जित करते हैं। और इसीलिए दान का मतलब ही होता है, जब हम शुद्ध भक्तों को, सन्यासियों को, वैष्णवों को जब दान करते हैं, तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं यहां पर। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी हो सकता है धन अर्जित करे, लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं, मंदिर निर्माण के लिए, संकीर्तन के लिए, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। तो वही भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं
कि जो मनुष्य होता है, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वो इस जगत में सुखी रहता है और उसे कोई भी भय और दुख नहीं रहता। जबकि जो लोग ममेती, मैं और मेरा और इसमें लगे रहते हैं, उन्हें दुख और शोक में जीना पड़ता है। तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितना हो सके शेयर कीजिए। आज यही अपने सत्र को विराम देंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आगे आने वाले सत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद।